parenthood, motherhood. It's a fun journey. Absolutely. It's amazing. We were doing Big Boss. People used to call me Ramu Kaka. Make the woman feel special. He does all that. Yeah. किसी ने बताया नहीं जैसे किसी बोला ने नहीं किसी बताया exactly. You know, ये सब होने वाला है. I think even the hormonal changes, they make us a different person, and I feel that difference myself. Child is from 0 to say 10, 11, 12, 1 year. उसको क्या पता कि आप क्या financially secure कर रहे हैं. Always a sense of am I good enough. फैमिली को ग्लू करने का जो ये माध्यम बनते हैं ना बच्चे, इट्स आउटस्टैंडिंग. एकदम से अंदर से चिल्लाने की आवाज आई. We both sprinted inside. She was like, "Oh," our heart melted, and we were shocked. किसी ने बताया नहीं द पेरेंटहुड जर्नी. क्या करती थी? प्लीज वेलकम शरद केलकर, सना खान, निशा रावल, कीथ, अमृता रायचंद, अली असगर, कुणाल पूजा. तेजा मैं हूँ, मार्क इधर. I love children. मैं दीवानी हूँ बच्चों की. वाओ. Make the woman feel special. यही कहूंगी कि किसी ने बताया नहीं. मैं बता रही हूँ और मैं ओपनली बता रही हूँ. सच बोलूं मेरे अंदर अल्लाह मुझे क्यों नहीं ट्विंस दिया आपने, मतलब व्हाई. आज मैंने एक्चुअली लिटरली उसको ऐसे किया है. Veda has to always remember I'm the best Masi on the planet. छोटी रूबी पैदा कर दी मैंने. घर की मुर्गी दाल बराबर And then he चक्कर है keeps इन सब के them- लिए. Yeah, मैं वैसे yeah. And you're becoming a hotter and hotter daddy. so different. I mean, no, different Nia, you are inspiring. इस सीजन में इनका होना तो बनता ही था. Hi my beautiful people, namaste and welcome back to a brand new episode of किसी ने बताया नहीं द पेरेंटहुड जर्नी. हमारा मिशन है अवेयरनेस क्रिएट करना प्रेगनेंसी के लिए, मदरहुड के लिए और अब पेरेंटहुड के लिए. आज का एपिसोड जो है वो बहुत खास है क्योंकि आज एपिसोड में हमारे पास ऐसे गेस्ट हैं जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि एक पिता का अपने बच्चों की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस होता है. प्लीज़ वेलकम actor, model, and now a father, a proud father, Keith. Hi Keith, thank you so much. Thank you Thank very you much. so much. पहले सीजन में रोशेल, she did the बोलते हैं ना utmost favor for us by sharing her experience. और सीजन 3 में आपने अग्री किया कि आप अपने फादरहुड के टिप्स एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे. इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस. How could I not, Rubina? मैंने आपका एपिसोड देखा था रोशल के साथ एंड आपका जो मोटिव है, जैसे आपने कहा था शो के पहले भी, टू रीच आउट टू पीपल एंड एक्सप्लेन कि पेरेंटहुड, मदरहुड, जो चीज़ें नहीं कही गई हैं, जो बताई नहीं गई हैं और समझाई नहीं गई हैं, to put a little bit of light on that, but I think more importantly to explain to people how much fun it is, क्योंकि इतना भय होता है सब में, becoming a parent, oh my god, responsibility, ये वो, motherhood, pain, pregnancy, hormones, ये वो, but it's a fun journey. Absolutely. It's amazing. It's like the Absolutely. best part of life. मतलब इतनी खुशी मुझे 11 महीने में जो मिली है, my daughter is going to be 11 now. Yes. Healthy, beautiful daughter. Healthy, beautiful daughter. Touch Yes. wood, touch wood. Touch wood. मेरे को इतनी खुशी लाइफ में कभी नहीं मिली. I've never felt, जैसे कहते हैं ना, the feelings of protection, love, जिसकी इंसानियत जिसे कहते हैं अंदर से जो निकल के जो आती है. It's never been more apparent in my life. I mean, हम लोग हमेशा कहते हैं जब पेट होता है प्रोटेक्शन होती है, but just level अलग हो जाता है. I mean, जो अपना खून होता है ना, वो जो चीज़ें जगा देती है अंदर, Exactly. it's something else, but it's beautiful. To begin with, आप मुझे सिर्फ आपका डे कैसा रहता है with जो एंड रोशेल वो बताओ. हाँ, सुबह उठती है, पहले वो, ठीक है, रोशेल सबसे पहले वो उठती है और वो जायज़ है बिकॉज रोशेल is not an early riser. Okay. Okay. I was a little early riser, but not at her timing. Okay. The day starts with her, and I think रात को 2-3 बार उठना पड़ता है because sometimes I'm bottle feeding in the night, you know, Yeah. doing all those things. I love to be hands on it. It's fun for me. Wow. I really do that. I enjoy it and do it सुना with. आपने? He does all that. Yeah. But I think it's क्या कहें इसको, अंदर से खुशी मिलती है. हाँ, मतलब नींद टूटती है. Initially थोड़ा सा लगता है यार उठ रहा हूँ, फिर उसकी शक्ल दिखती है, मतलब अपने जहन में, and सब then भूल जाते हो सब ना? भूल जाते हो. You forget everything. Yeah. And then I wake up in the morning and the first thing I see is her face.
एंड यू जस्ट दैट बिग स्माइल. अभी उसके 4 दांत पे निकले, 2 ऊपर 2 नीचे, और ये करती है. एंड यू जस्ट नो दैट शी इज रेडी फॉर द डे एंड यू हैव टू बी रेडी. देन ब्रेकफास्ट कौन बनाता है? मिक्स्ड है. हम लोग वी आर ट्राइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्यू थिंग्स. कभी कभी ना वो पैकेट्स होती हैं ब्रेकफास्ट की, उसको बहुत पसंद है. अच्छा, okay. बिकॉज शी हैड अ बिट ऑफ अ gagging problem. अच्छा. So these again are things you don't understand, you don't know when you're becoming a parent. हर एक की journey अलग रहती है. So she had slight extra heightened senses, so her gagging was excessive. So we had to get this pureed food, especially वो मंगवाया है, very clean ones, and you know you get very conscious about what you're खुद मतलब आप ऑर्गेनिक नहीं खाओगे लेकिन बच्चों के लिए कराओगे. करेक्ट. You don't want to stress them out. Correct. तो you know sometimes you give that packet, but sometimes I try to make थोड़ा सा you know steel cut oats, थोड़ा सा banana डाल के, making those things just like you know making it fun for her. And you must have learned it just for her, na? For her. I myself, I think जो भी होता है मैं डाल देता हूँ. I'm a big foodie. I love food, but it's not the most important thing in my life. मतलब नहीं भी होगा जो होगा मैं खा लेता हूँ. दाल चावल भी अच्छा है मेरे लिए, सब कुछ अच्छा है. लेकिन उसके लिए I want her to enjoy her. Exactly. You know, develop that good association with food. Connection with food, The connection with food has to be positive. Wow. I can just picturize the whole scenario in the kitchen where Correct. daddy is cooking for his little girl and she's enjoying it. And not to forget, the mum wants her coffee also. ममा की कॉफी भी Coffee बनती बनती है. है. वाओ. मतलब सिर्फ जो नहीं, रोशेल भी पूरे फायदे और पूरे you know she is being pampered Correct. so much. And I'm happy. So breakfast is something I can do. I can't Okay. do the other meals. Breakfast I'm very good at. So But नाश्ता मैं that's the अच्छा कर best लेता thing. हूँ. That's the Correct. best thing. दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो गई. और लैंग्वेज ऑफ लव हो जाती है एक तरह से ना. You when you like रोशेल के लिए कॉफी बनाना बहुत जरूरी है. I remember when we were doing Big Boss, people used to call me रामू काका. I didn't give a damn. मुझे क्या फर्क पड़ता है? Please, आप और People, रोशेल it's- के लिए है वो. That's what she used to tell everybody. She says, listen, I don't know why you guys really care about this, but I mean, That makes he her doesn't. happy, He loves na? it. I don't. Yeah, for me, it's the language of love. I mean, if I give her coffee, I still do. After being in a relationship for 10 years, I make her So morning coffee. So, beautiful, it makes her feel. I think these are things that, for want of a better word, make the woman feel special. You know, the language of love. You have to understand. How मेरे लिए beautiful. अलग चीजें होती हैं. How beautiful. So we have to understand each other, and I think I that's think that important. language of love ना आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है यहाँ पर you've actually given me this topic and let's elaborate a bit on this. जब love language की बात आती है स्पेशली अब पेरेंटिंग में बिकॉज वी नो कि अब एक दूसरे के लिए उतना टाइम नहीं है. नाउ आई थिंक हाफ तो नहीं, हाफ से ज़्यादा अटेंशन अब जो को जाती ही जाती ज़्यादा, है, yeah. विच इज़ इम्पॉर्टेंट Correct. एंड शी नीड्स इट राइट नाउ. सो do you find challenges in maintaining that balance? Sure, to- absolutely. I'll give you थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ मैं छोटा सा. Okay, I was very particular about always opening the car door for Rochelle. अभी की बात है, कल रात की बात है. We took her to the pediatrician. So we had parked the car and I had got Joe out of the baby seat. So I was carrying her across the road. Now मेरा ध्यान है सड़क पे कि गाड़ी आ रही है and I have to make sure that she's safe. So I forgot that I have to open the door for Rochelle also. और मैं निकल गया. So just a small example, but making, you know, and ये बात लगती है because she's so used to that what you do for her, right? एकदम से मैं नहीं कर रहा हूँ वो या मेरा ध्यान कहीं भटक गया है. So she feels bad, but you know you have to understand that women are also people, right? They are इंसान है वो और अंदर से जो उनको बातें जो आदि है एक हैबिट क्रिएट किया गया है उससे शिफ्ट हो जाए तो the language of love shifts and you start doubting थोड़े सेकंड के is that, but not in a bad way, just that you know you miss that. Exactly. You miss it. But Keith, you are mindful about this Yes, you thing. have to You are be. mindful about this little change also itself says a lot. Yeah. But you're also you will be told, let me make no mistake about it, Rochelle will make it known कि ऐसा नहीं है कि you're just mindful of this कोई संत है. Yeah. But to understand that when she says that she's coming from a place of missing it, she's not trying to accuse you or anything, Yes, right? yes. So She's just letting that you is know letting you know. that I Correct. miss those days, and absolutely it happens with us also. बहुत से ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पर हमारा खुद का समय होता था. You know, even that for me. My love language is more when he cuddles me, when he holds me, or when he just places his hand. Correct. मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मेरे लिए वो फिजिकल टच बहुत ज़्यादा मायने रखता है. और अब हम उस चीज़ को मिस करते हैं. Correct. क्योंकि अब बच्चे क्रॉल करना शुरू कर रहे हैं. अब अटेंशन और एनर्जी अब ज़्यादा बच्चों पर जा रही है. अब उनको उठाना और कभी जब अपने लिए टाइम मिलता है तो इट्स लाइक टू एग्जॉस्टिंग. Yeah, you're just shutting down. मतलब
बंद हो और जाए। फिर मैं बार बार तो नहीं, अगेन नॉट इन एन एक्यूजिंग सेंस, पर मैं अभिनव को बोलती हूँ दैट आई मिस दैट। करेक्ट। बोलकर हम छोड़ देते हैं, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ अपने दिल को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, भारीपन भी देती है। लेकिन हम वो समझते भी है कि अब हमारी हमारी ज़िंदगी में एक नया बदलाव आया है, नए लोग आए हैं, नई जिम्मेदारियां आई हैं, तो वो अभी जो टाइम वो ले रहे हैं, अभी जो वो स्पेस ले रहे हैं, उसके लिए वी विल हैव टू बी मोर पेशेंट। You have to be. पेशेंस इज You have to थोड़ा switch बदलना पड़ेगा, you have to realize कि as a father he is doing things also which he is not used to. किसी ने बताया नहीं, जैसे किसी बोला, ने नहीं बताया, exactly. कि ये सब होने वाला है. And even with his wife, Yeah. like I miss things that Rochelle used to do, because I know she as a mother, that mind space is not there. You're so involved and so it's like a laser. और अगर आप नहीं है तो there's something wrong. Exactly. I think even the hormonal changes, they make us a different person, and I feel that difference myself. And you have to be very aware of this. Hormone thing is a big thing जो कोई नहीं कहता. And I think you have to remember from the time your wife gets pregnant till maybe 2-3 years after the child is born, you're going to see big changes in terms of her mood and things that are happening. And it is not you. Don't take it personally. आप पे नहीं है वो. It is her, right? She also knows it, but she can't help herself because hormones is something that is so overpowering, so overbearing. वो आपके mood को swings करता रहेगा. And as a father, you have to realize, as a husband and a father, you have to be the pillar. You have to be, आप में धैर्य होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए. और ये नहीं है कि you can't wish your wife away कि हाँ यार मम के घर चली जाए या वहाँ चली जाए और बच्चों को लेके चले जाए. You have to realize that you have to man up and stand up and be the person that she needs you to be. And especially your child. This is beautiful. This is beautiful. And coming from a man, I think this is what we need today, to hear more, to have such a mentality in a family. Because बहुत सारी फैमिली, मैं खुद मेरे मतलब फार एक्सटेंडेड या फ्रेंड्स के बच्चे होने के बाद या रिलेशन में मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि एक पति पत्नी के बीच में इतना डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है. एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट द ऑब्वियस पार्ट. द ऑब्वियस पार्ट इज़ कि हम माइंडफुल होना छोड़ देते हैं, या हमें लगता है बच्चे होने के बाद तो ये ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि हम वो समझते नहीं कि ये क्यों हो रहा है. हमें सिर्फ ये लगता है कि बदल गए हैं, बदल गई है. लेबल्स होती है ना अपने दिमाग में. Exactly. If you do not understand that, as a woman, it's difficult for us to explain. क्योंकि the hormones, the state of mind doesn't allow us to be who we were or who the guy fell in love with. And it's difficult. And it's difficult for us to first process the thing. और जब हमको समय इतना सा मिलता है to process, तब तक हम इतने थक चुके होते हैं, हमें ऐसा लगता है यार आराम ही कर लेते हैं. But you need to, at that point of time, reach deep inside and maybe have some kind of, I didn't have it, but because I've been past that experience, I know that it's important to have people around you, maybe 2 people or 3 people who you can process with. This is what I feel that should be done. And even for a woman, you need to have. So I think I was talking to somebody and they're very qualified. तो कह रही थी कि the best thing to have is for a woman to have 2 of her friends who she trusts her husband to speak to about her. Okay? Achha, okay. And for a man to have 2 friends that the wife can speak to. Okay. Right? Okay. 2 of your best friends, जिगरी यार. तो क्या होगा कि when you're behaving differently, I will speak to your friends and say कि ये बातें she's changing and all that. You can offload without her feeling betrayed. Exactly. And you can also offload to my friends saying that he's not being this thing. And obviously they need to be a little sensible. That's a valuable and level-headed piece of people. information. They can give them advice and say, listen, I know this is going to happen. Take it with a pinch of salt. It's not about you. She's not punching you. She's just going this way. And for a guy, you need to understand also that he's learning things in life. It's a new experience for him. किसी ने बताया नहीं. Wow. I feel that that's important. So it is safe to say that पिता का रोल सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करना नहीं है कि मेरे बच्चे के लिए फाइनेंशियली मैं एक सिक्योर वो बना रहा हूँ, बट आई थिंक मेंटली और इमोशनली उसकी माँ के लिए जो आप मेंटली और इमोशनली कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैव मोर पॉजिटिव इफेक्ट्स इन अ चाइल्ड्स साइकोलॉजी व्हेन ही और शी ग्रोज अप. Correct. Am I right? So I'll give 100%. And Ravina, let's face it, when a child is from 0 to say 10, 11, 12, 1 year, उसको क्या पता कि आप क्या financially secure कर रहे हैं? Exactly. Does it make a difference to you if Abhinav worked for those 12 months and brought in extra? Doesn't really make a difference. Was it important to you that he was standing there beside you
more important, right? उसके बाद हमेशा वक्त मिलेगा, and time is never lost. God is great, you know, He'll always make up. So I feel that even if it was time for me to take a back seat for some time, be there for my family that God was going to bless me with, my wife that He's already blessed me with. So important to be there, right? उसके बाद चीज़ें होती रहेंगी, you know, things happen, but if you're not going to, बुनियाद अगर ठीक नहीं हुई ना, तो इमारत आप जितनी मर्जी बना लो कहीं ना कहीं टूटने वाली गिरने ही है. वाली लेकिन है. अगर आप शुरुआत के जो कुछ साल होते हैं वहाँ पे आप अपना फाउंडेशन बिल्कुल सॉलिड बनाएंगे तो कुछ भी होगा बाद में, यू नो, योर फैमिली विल ऑलवेज बी ग्रेट. तो कीथ, आपको फील होता है कि हमारी जनरेशन हमसे पहले वाली जनरेशन में पेरेंटिंग स्टाइल फ्रॉम फादर्स साइड फ़र्क है? बहुत ज़्यादा. क्या फ़र्क है जो आप महसूस करते हैं? So I'll give you my example. My father was very tight-lipped. जैसे होते हैं. I think Yes. fathers always हमारे डैड के जनरेशन या उनके पहले के ज़्यादा बातें नहीं करते थे. Not very expressive. आप lucky थे if your father was very expressive. yeah, But yeah. mostly, but somebody told me something very interesting. कहते हैं कि आपको love language पता करनी है. What was their love language? Provision, protection. दो चीज़ें जो उन्हें सिखाई गई थी. ठीक है, provision, protection. तब इंटरनेट नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी सीखने के लिए. उन चीज़ों पे उनकी फैमिली वैल्यूज़ बेस थी कि मैं प्रोवाइडर हूँ, मेरे को काम करना है, एग्जैक्टली. मैं एज अ मैन हैव टू प्रोटेक्ट माई फैमिली. ठीक है, ऑलमोस्ट एनिमल इंस्टिंक्ट. अभी जो चीज़ें हैं हम जो समझ रहे हैं धीरे धीरे कि देर इज़ मोर देन जस्ट दैट, right? The father has extra roles. You have to be, if you're not giving the role model of a good husband, your daughter is going to see that and associate that when she grows up. Exactly. So what man will she choose depends on how you treat your wife. So true. Okay? So true. You also understand that there is cuddling is an important part, Yeah. not just talking. Yeah. You have to hug your child, Yeah. hold them, play with them. Yeah. Make अभी I them was feel reason- secure. Make them feel secure. Physically as well. And they say that this is the new research कि जब आप अपने बच्चे के साथ with a father, it is playful behavior. जिसे कहते हैं, Exactly. जब आप खेलते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो लव हार्मोन होता है Yeah, बच्चे yeah, के लिए. yeah. और माँ के साथ होता है कडलिंग. Yeah. और मैंने ये देखा है अब with Josephine, she goes to her mother when she wants to be cuddled in the night, when she wants to snuggle up, spooning करके Rochelle Yeah. होती है. And it's the most beautiful sight that I can ever imagine. Like I look at them cuddling and I'm like, wow, I'm such a lucky guy. And they'll come to you when they want to play. उसके बाद मैं खेलता हूँ, I rub my nose in her belly, she laugh, hey, and you know, her first laugh was with me. So I was like, wow. Wow, lucky that's man. amazing. Really lucky. Like Yes, yes. I won the lottery, jackpot. Yes. So yeah, it makes a big difference to understand, you know, that there is so much more. Earlier, the fathers were like, you know, more बातें करो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास आना, पैसे की ज़रूरत है, you come to me, you know, and emotionally you go to your mother. Exactly. But अब वो चीज़ें blend हो रही हैं. You understand there's bigger roles for the father and the mother also, you know, that there is, you've got to, you know, be there emotionally, and I think mothers always did that beautifully. Apart from that, you also have सीखे हैं, you know, there's certain things you have to pass on to your child that will help her or him become a different person. इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट चैलेंजेस, कोई एक दो ऐसे चैलेंजेस आप मुझे बताइए जो आपको स्पेसिफिकली व्हेन जो वाज बोर्न उसके बाद से लेकर अभी 11 महीने में जो आप टैकल कर नहीं पा रहे हैं और यू आर ऑन अ वे टू कि यार आई विल बी एबल टू मैनेज दिस. ऐसे कोई चैलेंजेस जो विच यू फील के दीज आर लाइक दी रॉक्स इन माई और दी हडल्स इन माई जर्नी. So I think there's always a sense of, am I good enough? Okay, I think as a father, that's always going to be a question mark. Am I doing the best that I can? You know it, but you'll always question yourself. कि मैं 100% कर रहा हूँ या 99% कर रहा हूँ. You know, there's too much of pressure that we put on ourselves. Correct. I do it. करेक्ट. I do it. It's not that I'm this thing, you know. जहाँ तक मैं भी जानती हूँ अभिनव भी उनका बार बार यही होता है यार. Correct. And you feel guilty if you अगर थोड़ा सा भी doubt लगे ना, थोड़ा सा भी. For example, if I'm watching her and she slips and she bumps her head, I start feeling guilty. What? I mean, wasn't I quick enough to see that? Yeah. आपने इधर, okay. So I'll give you an example. अभी इसका मैं sorry उदाहरण बहुत देता हूँ. नहीं प्लीज. तो I was we have that cameras everywhere घर पे, है ना. तो me and Rochelle were both रात को it finished the long day. Nanny was not there. Nobody's there. It's just me and her, right? So we had a long day with her, and plus she was playing up that day, whatever. तो रात को हम लोग दोनों खाना खाने बैठे. So we finished dinner. I'm sitting. She's sitting reading a book. So we're both watching our camera, flipping between watching her and taking time out.
And she says, "Are you watching?" I said, "Yeah, I just flipped and I saw her." I said, "Have you seen?" She says, "Yeah, I flipped and I saw her 1 minute ago." एकदम से अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आई. We both sprinted inside. She was like, "Oh!" Our heart melted, and we were shocked that in 1 minute हमारा ध्यान जो बटा, literally we both probably saw the camera at the same time, और जो 1 minute निकला बीच में, she started crying. So you start feeling guilty. You know, she could have fallen down, or she could have, you know, things like that. That can be 1 minute is so heavy on so you. heavy. Yeah, You feel guilty for that 1 minute of taking time out of reading a book or doing I something. can feel right? that. I can feel that. हमारे साथ अक्सर ये होता है, अब जब जैसे उन्होंने क्रॉल करना शुरू कर दिया है, कहीं भी they just want to hold things. They want to grab walls ताकि वो Correct. खड़े हो सके. Correct. वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर वो जो गिरते हैं कि हमारा मतलब हाथ पीछे कुछ लेने के लिए गए होंगे या उनका टॉय उठाने के लिए गए होंगे, तब तक वो धड़ाम करके जो चोट गिरते हमें लग जाती है. हैं, उफ, तो मतलब ऐसा लगता है कि अभी तक मतलब वो जो 1 घंटा फोकस किया था और वो जो 10 सेकंड जो मिस हुए हैं, उस पे फोकस ज़्यादा रहता है. वो 10 सेकंड जो मिस हुए थे ना, वो पूरा मतलब पूरा दिन हम हाय तौबा एंड देन आई थिंक अभिनव तो बहुत सपोर्टिवली बोलते हैं कि यार ये सब चीजें होती रहती रहेगी हैं. और ये सीखना पड़ेगा. He's a And braver you will man. have to- Yeah, मुझसे नहीं and you होता. will I let feel go. very guilty. I'm like, oh no, what a bad father I've been. No, no, even he feels guilty, but then he keeps reminding me. It's कि okay. होना ही है. होगा. और ये जरूरी भी है बहुत होना, ज़रूरी है. क्योंकि वो भी सीख रहे हैं, क्योंकि हम भी कब तक उन्हें प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. पता है आप you're from the up in the hills. I remember I'd gone once. शिमला गया था, कहाँ गया था, तो वहाँ पे ना हम लोग जहाँ ठहरे थे, बाहर एक लेडी थी, वो घास काट रही थी. ठीक है, शी वाज कटिंग द थिंग. उसका बच्चा टॉडलर चल के ही वेंट एज ऑफ द, जो हमारा वो था ना ऐसे ढलान था और नीचे ड्रॉप था, कुछ खाई थी मेरे ख्याल से 30 फुट की. वो चल के वहाँ जाके बैठ के खेल रहा था. मेरी जान निकल गई. मैंने कहा यार ये इसने ऐसे ही छोड़ दिया. तो मैंने उससे उस टाइम पूछा था, मैंने कहा कि दीदी आपने ऐसे ही इसको छोड़ दिया? कहती है साहब गिरेगा तो चोट लगेगी तो सीखेगा. मैंने कहा यार ये तो ठीक है, लेकिन सिखाने का बहुत ही- हाँ ये 30 फुट का है, वो सीखेगा नहीं, वो कुछ सिखा के ही चला जाएगा. बट शी सेज मतलब उनकी सोच वो है कि बचपन से ही वो छोड़ देते हैं. Exactly. और वो जानता था कि यहाँ पे एज है, मेरे को सिर्फ यहाँ तक, इस पॉइंट तक जाना है. एग्जैक्टली. पहाड़ों और में बच्चा. कहावत है ना कि पहाड़ आपको हम्बल बनाते हैं, क्योंकि टेरेन इतना टफ है दैट it breaks the ego of a man. It says you cannot conquer me, I'll allow you to conquer it. वाओ. So ये, और अभिनव भी because he does mountaineering and everything, तो वो हमेशा कहते हैं I can only summit if the mountain allows me. Correct. So I think that's same like can be big- said about parenthood also, right? You can't conquer it, but it will allow you to conquer it. Exactly. और इससे रिलेटेड मैंने ये भी एक किसी अच्छे शख्स की बात सुनी थी कि हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं, बच्चे हमें सिखाते हैं. तो जब से आपका बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. जी. कीथ, आप मेरे को 3 टीचिंग्स बता सकते हो जो आपने अभी तक सीखी हैं अपनी बेटी के साथ? Okay. मैंने ये बैंड्रा में देखा था हमेशा, when driving past, the child makes the parent, child makes the mother. I would also say child makes the father. So that's the first thing. Second thing, I think that you have to be kind to yourself. You're never going to be perfect, but God does not want you to be perfect. God wants you to be present. Wow. That is the most important thing. Wow. Right? So if you're present, that's all that's needed. And the third and the biggest thing I think that I have realized is that the journey is where the truth lies, right? And everybody's truth is their journey. So you will have a journey. It may be similar, but it's never going to be the same. तो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आपकी जो खुद की जर्नी है वो आपको खुद चलनी है, और वो अलग होगी. इट विल हैव अ डिफरेंट फीलिंग. उसमें बम्स अलग होंगे, उसमें खुशी अलग होगी. Exactly. But at the end of the day, when you finally reach the destination, everyone is super happy because you have an amazing family. Yeah. I think that's And the I third think thing. everything begins and ends with the family. बिल्कुल. ये मेरा मानना है. बिल्कुल. हो सकता है कि मैं एक्सट्रीमली आई एम अ फैमिली पर्सन, हेंस आई वो स्पीक है, दैट. नींव है, सोसाइटी की नींव है. अगर फैमिली स्ट्रक्चर टूट गया ना, जो हो रहा है आजकल, विच इज हैपनिंग, तो सब कुछ खराब हो जाता है. एंड बाय स्ट्रक्चर आई डोंट मीन कि आपका रोल ये है, आई डोंट मीन दैट. दोज थिंग्स आर रॉन्ग. मतलब ये जो पुरानी बातें, जो आई एम नॉट सेइंग दैट सब पुरानी बातें रॉन्ग है, लेकिन उसका तरीका बदलना पड़ेगा. एंड प्यार,
teaching love and confidence, because insecurity leads to hatred, to anger, those emotions. The positive emotions come from love. सबको पता ही है. तो जितना आप प्यार मतलब अपने फैमिली में रखेंगे, चीज़ें काम रखेंगी, हस्बैंड वाइफ में, ग्रैंड पेरेंट्स में, वो सब, the children will learn from that and they will take that into society in the future generation. आपने ग्रैंड पेरेंट्स का जिक्र किया. How much do you value keeping your daughter with the grandparents, both sides? कितना Okay. समय और क्यों? See, both sides I can't say because both my mom and dad passed on, right? So, and I think they'll be definitely watching her from up there and feeling very happy because here's another anecdote. My mother and father both wanted a girl. My mother especially was dying to have a daughter, like all mothers do, wanted to have a little. And unfortunately she passed on, but I know that she would enjoy Joe a lot because, you know, that the feeling that... So, but with Rochelle's parents, because they live in Chennai, वो थोड़े से distant है, but because technology is good nowadays, हम लोग FaceTime करते रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, and they keep tracking her. कभी Instagram पे कुछ comment देना होता है. So, you know, that kind of thing is there. अभी तक we haven't traveled, so, you know, when we travel back to Chennai, she'll meet, they came here, Yeah. so they spent time with her or whatever. But to go back to Rochelle's birthland, and to see the grandparents there, उनके वातावरण में, उनके क्या system है वो सब, that will also happen. But I think it, you know, there is a lot of value to it. Unfortunately, like I said, हमारे situation में, because it couldn't happen, journey different again. But very important to know the grandparents, give them that love, respect, because I think the grandparents need it. You know, for them it's their journey getting complete. कि हाँ, ये मेरे बच्चे के भी बच्चे आ गए अब. You know. I've read somewhere जो ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के साथ रहते हैं, अपने ग्रैंड किड्स के साथ रहते हैं, उनकी उम्र 10 साल बढ़ती है. हाँ, 100%. और मैं तो खुद अपने माता पिता के साथ ही देख रही हूँ. कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये दर्द, वो दर्द, सब भूल गए हैं. अभी उठाना है, करना है, वो सिर्फ लेकर पेरेंट्स जाना के पास रह जाता है क्योंकि रात को उठा के चलना होता है. अदरवाइज ग्रैंडपेरेंट्स के सारे दर्द निकल जाते हैं. एंड दे आर हैप्पीएस्ट एंड उनमें इतना एनर्जी, इतना वो, हम अब देखते हैं ना, मैंने कहा इतनी एनर्जी कहाँ थी. करेक्ट. अभी क्योंकि बच्चों के साथ भाग दौड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एंड दे आर डूइंग विद अ बिग ब्रॉड स्माइल. करेक्ट. डोटिंग ऑन देयर ग्रैंडचिल्ड्रन. एग्जैक्टली. और कभी कभी हम तो ऐसे, Jealous अब हो जाता है बहनें भी आपस में मजाक करती हैं, बोलती हैं हमसे तो इतना प्यार नहीं था जितने हाँ, आगे girls से। अपनी हमारी पोतियों हमने से, क्या गलत नाती किया से वो था भाई? या फैमिली को ग्लू करने का जो ये माध्यम बनते हैं ना बच्चे, इट्स That's आउटस्टैंडिंग. amazing. Yeah. हमने अपने पेरेंट्स का इतना समय नहीं बिताया जितना अब बिता रहे हैं. हाँ, बता रहे हैं. बिल्कुल. और अब तो हम, मतलब ऐसा है कि मेरे लिए खासकर, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, अभिनव को काम के लिए आना पड़ता है, तो मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरी मदर, इज द रॉक सॉलिड फाउंडेशन. Wow. Yeah. My grandmother was for me. I mean, growing up, मेरी जो ग्रैंडमदर थी वो हम तीनों की परवरिश उन्होंने नहीं की थी, बिकॉज माई मम वॉज वर्किंग, माई डैड वॉज वर्किंग. तो बहुत समय हमने अपने ग्रैंडमदर के साथ बिताया. एंड शी वट एवर, यू नो, लाइक शी वॉज वेरी प्रेयरफुल, बहुत काइंड थी, जेंटल थी, हमेशा खुश रहती थी, सबको हेल्प करती थी. तो वो सब बातें ना हमने उनसे सीखी हैं. वाओ. सो मतलब हमारे लिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इक्वली, मतलब हमारी लाइफ में इक्वली उतना ही रोल प्ले करते हैं जितना हमारे पेरेंट्स प्ले करते हैं. बिल्कुल. और मैं तो ये अब कॉन्शियसली, यू नो, आई डू इट कि बच्चे अपने नाना नानी के पास रहे, अपने दादा दादी के पास रहे, सो दैट दे ऑल्सो लर्न द जनरेशनल डिफरेंस एज वेल. करेक्ट. उन जनरेशन की जो सीख है वो भी वो अपनाएं. हमारी जनरेशन जो हम अपने व्यवहार से, अपने यू नो लाइफ से उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो भी सीखे. क्योंकि आई थिंक दिस ब्यूटिफुल, यू नो, जेलिंग ऑफ 2 generations, जेलिंग ऑफ 3 generation. मेरी तो दादी भी हैं, तो उनकी परनानी जो है, Oh, wow. वो भी खेलती हैं उनके साथ, वो भी अपना समय बिताती है. और मैं उनसे कहती हूँ दैट, यू नो, what you want your great grandkids to learn, please teach them, spend time. वो उठाती हैं, वो उठा के उनको खिला रही हैं, घुमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं. At this age. और एक शिकन नहीं है माथे पर. क्या बात. And she enjoys it. क्या बात. And I feel blessed. And I, मतलब every single morning I just thank God and I say कि अगर फैमिली सिस्टम, अगर फैमिली की वैल्यूज़ हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हमारी एक ये तो बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट सही के है. लिए, द वे वी बिहेव इन सोसाइटी, सो आई थिंक
I am very blessed and fortunate that I have such people helping me around, supporting me, Very and important. shaping the future of my daughters. बिल्कुल. It is so important. और मैं कहता हूँ कि हमारे देश में एक चीज़ जो सही है वो संस्कार जो है ना स्पेशली टुवर्ड्स द एल्डर्स Yeah, yeah. बहुत ज़रूरी है जो कहीं और बहुत कम मिलती हैं मेरे ख्याल से आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया में है और जो ये जो अपने अंदर जो आ जाता है ना एक बारी तो हमेशा रहता है ये जाता नहीं है एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स आवर कंट्री ब्यूटिफुली यूनिक कि Absolutely. जितना हम आदर संस्कार करते हैं अपने एल्डर्स का वो कहीं और नहीं दिखता Absolutely. मुझे आज भी अपनी दादी से मैं काफ़ी डरती हूँ. हाँ बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं जो मतलब लगे उनकी थप्पड़ भी मार देंगे। उनकी सहमति बहुत ज़रूरी है. शी इज़ ऑलवेज बिन द हेड ऑफ द Head of the फैमिली. family. और उनकी वो मतलब एक अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट गिव्स मी सो मच ऑफ वो एब्सोल्युटली दादी ने अप्रूव कर दिया. एब्सोल्युटली और ये इतना इम्पोर्टेंट लगता है और मुझे अब फील होता है कि ज़रूरी है. कहने को तो हम कह सकते हैं ना इंडिपेंडेंट लाइफ इंडिविजुअल वो बट जब हम अपने बच्चों के लिए अब देख रहे हैं ना तो मुझे फील होता है कि नहीं यार हम एक ऐसे फैमिली सिस्टम में एक ऐसे सिस्टम में पले बड़े हैं जो कि हमको अब हमारे लिए एक फ्यूचर या फिर हमारे लिए एक अपने लिए वी कैन चूज वेयर वी वांट टू बी विद द राइट डिसीजंस. These people in our life Make a are big helping difference. us. करेक्ट एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जो हमारे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है हमारे ऊपर वो हमारी फैमिली की लॉन्जिविटी हेल्थ हैप्पीनेस उसमें बहुत योगदान देता प्रोटेक्शन उनका हमेशा रहता है है. एज यू सेड ना आपके माँ बाप हमेशा चाहते थे बेटी. आई थिंक इट्स देयर ब्लेसिंग्स Their यू blessing. हैड जो. Absolutely. And I strongly believe in this Thank you. thing. And I Thank you. strongly believe in this thing. Thank you very When you much. said that, I had goosebumps. Correct. And I wanted to say at that point in time, Jo is the manifestation of their blessings or their their desire to have a daughter. Thank you very much. And I think what you just said makes me feel really soft inside, because I know how important it was for her. So, yes, what you're saying, it's her blessing. Yeah. So beautiful. As a father, what do you want to change in yourself, build in yourself, या फिर create that value in yourself that your daughter looks up to you and says, Can I send you a long list later, or should I just keep it to 1 or 2 points? I would love the long list, but अभी के लिए अभी के लिए 2 या 3 चीजें. One of the most important things is to be the man that when she grows up, she can not just respect, but also give her a benchmark. When she is looking for her life partner, that these are the things, that are important in a man. You are going to set a benchmark for her. Benchmark. तो I'll give you एक छोटा सा उदाहरण. I'll tell you. I'll give an example. क्या होता है कि हम लोग ना हमेशा बोलते हैं कि अगर बच्चा नहीं जाना चाहता, even if it's a relative, नहीं आप जाओ अंकल के पास, right? No. Exactly. Whether it is uncle, whether it is doctor, whether it is spiritual person, whoever, if Joe is not comfortable, she is not going to the person. She makes it known to us. She'll look the other way, doesn't want to go. ये उसका boundary है, उसका दायरा है. She's not happy. No, she will not go. Exactly. She chooses when and if she wants to go. So you try to win her over, her confidence over. Okay, give her time. So if they, a lot of people when we go to church will say to us, "Oh, she doesn't come." Yeah, she doesn't come because she's not comfortable. And kids are intuitively intelligent. Correct. Very much so. So she'll go to a lot of the didis who are playful and all that. If somebody is not even in our friends, if there's somebody who's not very fond of babies, she'll stay away. They sense it. Correct. They sense it 100%. Absolutely. And somebody who's extra friendly also, they'll stay away. Exactly. And I want to develop her bearing of what is over this thing, what is right. Let her develop her own skill set of understanding people, and draw her boundaries. If she does not, no means no. It does not mean maybe, it does not mean yes. It means I will say if and when I am ready to come to you. तो वो चीज़ें मेरे को उसको सिखानी है. And you'll instill that confidence. I want her to have. Wonderful. इस conversation के ज़रिए you want to let people know जो कभी किसी ने बताया नहीं and you think that this is the platform that I can share. I think the one thing that comes to mind immediately is that it's a journey that is going to have a lot of challenges. Apart from your daughter,
with your relationship with your wife also, because you will see her change. Okay, I'm not talking about physically, in terms of the temperament, not even personality. Personality never changes. The temperament, like you become a little edgy, women go through all of that. Expect that. And know that it is 90% of the times, it is not her doing. It is her hormones that are playing up. Okay? Some people may push the limit, but that's different. I'm just saying if you have an honest relationship. So be prepared for that. Create your environment where you can deal with that in a healthy way, in a respectful way, and in a positive way. That should be said for all the fathers out there. Absolutely. So closing this conversation, we have छोटा सा segment दिल से दिल तक. एक ऐसी सीख जो आपने अपने माता पिता से सीखी थी and you still follow that. I think it is love. Both my parents loved unconditionally. My mother was so apparent. And with my father, I think his language of love is something that I understood with time. And appreciated it for who he was. Beautiful. एक ऐसी सीख जो आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं. Can I say love again? Yes, you are allowed to say that. I can. But yeah, I will tell her to always trust herself and be very confident in who she is as a person. Always believe in who you are is what I'm going to teach her. Beautiful. एक ऐसा पॉजिटिव बदलाव जो आपने रोशेल में देखा after she became a mother. I think with Rochelle, the beauty was always there because she's a very mothering person, okay, very nurturing. She's actually a caring soul. And I think more so after Josephine is born, you just see, how she is so self-sacrificing in her space for her child. I think that's been the most beautiful thing. And to see them, like I said, when I see her spooning with Rochelle, for me, it's like, how do I frame this? I want each moment of this to be put, and I can see this later on in my life. I am envisioning it. And I'm just falling in love with the description that you are. Sometimes I feel like I want to go back inside and sneak in and put my hand also, make it fully. But then the thing is, I don't want to wake her up. So I'm like, करूँ नहीं करूँ. एक दो बार तो मैंने किया, डांट भी पड़ गई कि उठा दोगे. और एक दो बार I got away with it. I went back and I just went to sleep like that. So Beautiful. yeah, that's lovely. आपके कोई ऐसे आइडल या इंस्पिरेशन जिनकी एक सीख आप जो को देना चाहते हैं? I think Rochelle. Wow. And the thing that always drew me to her, and I think the reason why I think she's so special is she has an amazing connection with God. And I'm not saying it lightly, and I'm not saying it, मैं सोच के बोल रहा हूँ ये, because I know that she has that, and I think it's so important. She's taught me to be closer to God, to have more honest conversations with God. And it's not about the idol. It's about your soul. The spiritual aspect Spiritually of it. connecting. And I think agar wo ho, as a couple also, you grow closer and you go through the seasons of life that I call them. With faith. Alag-alag seasons with a lot of faith and grow in them rather than, misinterpreting seasons. And I think that's something that I think she's teaching little Josephine also very well. Beautiful. Akhri. Today you have an opportunity to let Rochelle know things that you have not told her past 11 months. Or just one thing. One thing I think I will say. I think she needs to know that she has been the best mother to Josephine that she could have been. I don't see how you could have done anything better because it's not possible. And I'm not saying that to make you feel better. I have seen the journey that you've been through and you have done your best. So your daughter today, what she is and how she is, and we're very proud of her, I know we both are, is all there because you have done everything in your capacity. So hats off, and you've been a special mother and a beautiful mother to Josephine. And that makes me feel even more attracted. I find you the hottest mother on the planet. Wow! This is outstanding. 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 Thank you. I mean, I am jumping in joy listening to these words, and when
I really want to witness when she listens to this. And thank you for doing this. Love to Jo. Of course, Aw. I've seen her, on social media. Correct. She's absolutely But adorable. we should meet up. Yes, yes. Make some play dates. Yes, मैंने और रोशेल ने प्लान भी किया था. We'll have play dates. So once my daughters are back Correct. from the mountains, I would Correct. love to do that because it's not just the play date. It's going to be a lot of value creation when my daughters will meet you Correct. guys, and Absolutely. Joe gets to meet us. It's going to be the exchange of warmth and love, which is very important for their development. Thank Thank you you very so much. Love to Thank Joe, you for having and us. thank you for Rochelle, because I know she's taking care of Joe so that Correct. you can be here for Yeah. this conversation. Correct. So this is very important for us. We have a small token of appreciation for Oh, you. how sweet. Of course. रखा ही है। Ready? But आप ये इसका ध्यान देना प्लीज. हमने ना अब जाके चेक किया ठीक ये है, आपके ठीक चुभे ना आपको, हाँ, है ना? So we have this छोटा सा token of appreciation. Thank you very much. It has a gratitude jar जो मैंने इस season introduce किया है. How sweet. So whatever you feel is, you are grateful in your life, put it there, put in your gratitude jar, and maybe after years Wow, you can show it to Joe. That's a really sweet thought. Yeah. How interesting. Thank you so much. Thank you for very being much. here. Thank you. And again, you are doing a fabulous job. I think Thank you you. need to keep on doing this. Thank you so much.